let's get the program started. My name is Prachi Jetli, and I am so honored to be part of this beautiful event today. On behalf of Midwest Punjabi Association and Consul General Office in Chicago, I welcome you all. आप सबका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद, and साडी सारी team वालों तानु सारियां नु बहुत बहुत जी आया नु. And I was just talking to my team. I said, you know what? I'm from Haryana. Can I say thara bahut bahut swagat hai? So it really sometimes helps to be multilingual. But yeah, tonu sareyan nu bahut bahut ji aaya nu. Let's get the program started. I also wanted to thank all the organizations who have partnered today with today's event and showed their faith and support to us. And without further delay, let's start the program. As you all know, we are celebrating Vaisakhi festival today, and it's a very special kind of celebration. We are paying tribute to the martyrs who lost their lives at the Jallianwala Bagh massacre in 1919. Today, sharing this hall, sharing this roof with some finest poets and writers and creative minds from all over the Midwest. And as you can see, to grace the event, we have some very special guests today here, including Consul General Mr. Amit Kumar, his wife Surbhi Kumar, and so many wonderful officials, elected officials sitting right next to us. And thank you everyone for gracing the event tonight. And let's get the program started so that we can finish on time. So to start the evening, let me please invite the President of Midwest Punjabi Association, Mr. Gurmeet Singh Dhalwan, on stage. Before I invite him, let me tell you a little bit about him. He's a very well-known name in the media industry. He's the founder president of Adbhut Media, newspaper and channel. He's an entrepreneur with more than 2 decades of experience in wholesale and retail business. He's the founder president of Midwest Punjabi Association, a not-for-profit organization in the Chicagoland. He is also the member of Cultural Inclusion and Diversity Committee for Village of Hanover Park, Illinois. He's a community leader, social worker, and a philanthropist. So please put your hands together and welcome Mr. Gurmeet Singh Dhalwan on the stage. And as I was mentioning some special guests tonight, we have Mayor Rodney Craig from Hanover Park, Mr. Tom Daly, Mayor, Village of Schaumburg. I have our dear friend, trustee, Village of Hanover Park, Mr. Syed Hosseini, and some other special guests from Hanover Park as well. Thank you, sir. Thank you for joining us. I see Dr. Gopal Lal Malani from Village of Oak Brook. Thank you, sir, for always helping us. And as I mentioned, that we have 12 organizations who have come forward to help us and for the performances today, as well as they have helped us in planning and creating this entire event. And also I would like to mention, make a special mention of Mr. Ranjit Singh, who was the guiding force behind today's event, and he made sure everything is planned and executed per the plan. The organizations that helped us today are Bengali Association of Greater Chicago, Drama Tech of America, Anurag Mishraj, Federation of Indian Associations, established in 1980, headed by Mr. Rakesh Malhotra, Punjabi Cultural Organization, Michigan, Kalma De Ang Sang, Punjabi Literary Organization by Mr. Rajlali Batala. And as we are talking, we see the Congressman Raja Krishnamurthy here. Please put your hands together for the Congressman, ladies and gentlemen. Thank you, Raja, for joining us. So as I was mentioning, Mr. Gurmeet Singh Dhalwan is here, a famous entrepreneur, a very well-known name in media industry, more than 2 decades of experience, and just remember all that I said previously. Yeah. All right. So to welcome our special guest on stage, Gurmeet ji is here. Let me invite Mr. Amit Kumar, Consul General, India, Chicago, on stage to address you all. Thank you, Amit ji, for joining us and guiding us for this event.
Now I'll request Mr. Amit Kumar to say a few words. Thank you. Thank you, Prachi ji, Gurmeet ji. Dear friends, I would like to extend my warm greetings to everyone present here. It is good to be back among so many friends. As you all know, the Midwest Punjabi Association, in collaboration with the Consulate and several Indian American associations, is celebrating Baisakhi, the spring festival, the spring harvest festival in India. And the sheer diversity of Indian American associations which have joined hands to organize this event is, in a sense, reflects the microcosm of the incredible diversity that India holds. So I'm very glad that we have so many of them here today. This event will also pay tribute to the martyrs of Jallianwala Bagh, and I won't get into the historical details, but I would like to underline here that this was a turning point in our history of the national freedom movement. I think this barbaric event where General Dyer ordered firing upon thousands of unarmed peaceful protesters, I think stripped the colonial power that was ruling us of any legitimacy. It also shattered any illusions about the hopes that some Indian leaders at the time had harbored for self-rule or limited governors or autonomy. I think in terms of its importance, I think everybody across the political spectrum in India, across the length and breadth of India, the sentiment decisively turned against the British rule, and there was growing demand for complete independence, which of course culminated 28 years later on 15th August 1947. This event is also organized as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav activities. We are commemorating 75 years of our independence today. And I must mention here the rather unique format in which the cultural organizations have conceived of for today's evening. They are going to share reflections of several noted poets and authors of India who, not surprisingly, wrote about the Jallianwala Bagh, their reflections on it, how they saw it. So, and I had spoken to the grandson of Sardar Nanak Singh, who is a well-known Punjabi novelist, considered to be the father of modern Punjabi literature. His grandson happens to be part of the Indian Foreign Service, now retired, Ambassador Navdeep Singh Suri. And when I told him about this program, he readily agreed to give a video message, which we will be hearing later today. He also told me that since then he had translated his grandfather's works on the Jallianwala Bagh, but he also told me that he has just finished translation of another novel that his grandfather wrote about the partition. I think we are also going to have presentations on writings of Gurudev Rabindranath Tagore and another very noted Hindi poetess Subhadra Kumari Chauhan. And I think these writings are important because they not only provide a historical narrative as to what happened during that time, but also provide a socio-political and socio-cultural life of the times. To conclude, I just wanted to also mention that there will be a short poetry session and Prachi ji has mentioned about several creative minds present in the audience today who will be reciting poems in Hindi, Urdu and Punjabi languages. With those words, I conclude, but I do wish that you will enjoy this evening ahead. Thank you. Thank you, Amitji. Thank you very much. Let me, thank you, Amitji. Thank you so much. Let me invite our next special guest,
He needs no introduction. The most favorite congressman for all of us, representing the 8th Congressional District, Mr. Raja Krishnamurthy. Raja, please join us. Please put your hands together for Raja Krishnamurthy, ladies and gentlemen. Thank you, Raja. Sat Sri Akal. Good evening. Namaste. Salam alaikum. It's an honor to be with you, and as I like to say to everybody, it's an honor to come someplace where they can pronounce your name correctly. I've mentioned this to my good friends sitting with me at this table, but when I first ran for office, I said, "Hi, my name is Raja Krishnamurthy." And the person looking back at me said, "What the heck does Raja Krishnamurthy mean? Where did you get that funny name and what does it mean?" So I said, it's very simple. Translated from an ancient Indian language, it means Congressman for the 8th District of Illinois. Well, look, I just want to observe those 3 rules of public speaking. Be short, be sweet, be gone. 3 points. First of all, can you give a big round of applause to Gurmeet and the Midwest Punjabi Association for putting on tonight's excellent program. Thank you so much for bringing everybody together, and as CG said, you brought so many organizations together, and so that is wonderful. Second point, give a big round of applause to our dignitaries, including Mayor Craig, Mayor Daley, Trustee Hussain, Trustee Herb Porter, and then Mayor Gopal Lal Malani, and of course, our favorite Consul General, Amit Kumar, and his wife, Surabhi. Can you give them a big round of applause? I can't hear you. There's no enthusiasm. Third and final point is this. Can you hear me now? Yes. Okay. Third and final point, which is this. Look, we're here for a very serious reason, which is we're here to salute the unsung heroes of the Jallianwala Bagh massacre. And if any of you have ever seen the movie Gandhi, you know what a horrendous, insidious massacre this was. In fact, today in 2022, it rings a little bit like what we see in Ukraine, and much worse, actually. And so what happened there needs to be remembered so that it never happens again. Now let me talk a little bit about Vaisakhi. It celebrates one of the great religions of the world, Sikhism. Sikhism has 30 million adherents around the world, but 1 million of them call America home. And let me tell you about these Sikh Americans. Sikh Americans are some of the finest people you will ever meet. They are some of the most courageous people, some of the most intelligent and hardworking people, and some of the best looking people I've ever seen. And they know how to party. Am I right about that? And so I just want to say, finally, in conclusion, as respect toward you, I introduced a resolution in Congress on March 28th celebrating Vaisakhi. And basically what I said is very simple, which is that Vaisakhi celebrates Sikh Americans. And we in the United States celebrate Vaisakhi. And so all of us celebrate you and celebrate your family, celebrate your contribution, celebrate what you do, celebrate your courage, celebrate your bravery, and celebrate how you and your families make America a better, more prosperous, and a greater place. So thank you so much, and God bless all of you.
Thank you, Congressman Raja Krishnamurthy. Thank you very much. It's always a pleasure listening to you. Each and every word is a treasure. Thank you so much. While we have both our special guests, I need that, I'm short. While we have both our special guests on stage, let me invite our other dignitaries. Let me invite Mrs. Surabhi Kumar on stage, please. Ma'am, please join us. Can I? She's coming. Can I please request Dr. Gopal Lal Malani to join us on stage? Mr. Rodney Craig from Hanover Park, please join us on stage. Mr. Tom Daly. I think this entire table needs to come on stage. Mr. Syed Hussaini, ma'am, please join us. Sir, please. And we have another very special guest joining us. He is sitting right in front of us as well. Mayor of Glendon Heights, Mr. Chaudhry Khokar. Please put your hands together and let's welcome and thank all these beautiful people who have encouraged us by joining us today. And two very special people, Mr. Jagat Singh and Mr. Bhagat Singh, who is the father and uncle of Gurmeet Singh Bhalwan. Can I have both of you on stage, sir? And let's not forget the genius behind today's event, Mr. Ranjit Singh. Can we have him on the stage? It was his creative mind, his directions that we just followed, and everything just came together. And this event was not possible without his guidance. Thank you, Ranjit ji. Okay, thank you. Thank you. Let me request Mr. Tom Daly to say a few words and then you can pass the mic on. Thank you, sir. Well, thank you very much. It's an honor to be here this evening. This is a very important event for the community, and I'm glad you honored me with inviting me. I've known this gentleman for the past couple of years, and he's always been great, been very helpful and kind to me and the community too. So thank you very much. Gurmeet, Yes, it's an honor to have you in our thank you. community. Thank you. As a Sikh, Yes. we appreciate your time and your efforts. Thank you, sir. I did appoint you to one of my committees, the CIDC, the Culture, Inclusion, and Diversity Committee, and that's who Hanover Park is. And so I want to really honor the fact, the massacre, we're going back. We can't forget our history. Our history, no matter where in the world it's happening, that we honor one another, we honor our people, and we honor a free world where we can live and grow and develop our families together. That's so important. Hanover Park is a very diverse community. And with me tonight, I have two trustees that came along. I have Herb Porter and Syed Hussaini. They came with me. Herb brought his wife with him, and she is the Citizen of the Year in Hanover Park this year with her dedication to education. And we honor that, we honor the good work, and I'm honored that you invited us this evening. Even though I can't stay, I'm happy to be here for you, and I'm happy for the Sikh community. Thank you. And you do have my proclamation I gave you Yes, last sir. week. Yes, sir. Okay, that's good. Okay, very good. Thank you very much. Okay. Sat Sri Akal, everybody. How are you? Good evening. Assalamu alaikum. Namaste. Very nice to be here with you all today. When we were growing up, I thought it was one of the token that you have to be Punjabi to be in the army. Because there's so many Punjabis, and you guys know this better than anybody. Isn't that true? The most patriots that are always up front, who are ready to give their blood for the country. And what most recently happened with the
with the recent ban in India with so many things that Punjabis came out. Who came out? Farmers came out. Farmers is the backbone of India. And doing that made them do what they wanted to do, so they won. After 6 months, year, I don't know how long, but I know they were out on the street for a while for protect their farms. So thank you for what you do. And this event that we are, that we are recognizing today, it's important to remember. And I'm glad something like that is happening. Gurmeet, I'm proud actually to have you in Hanover Park and be on Cultural Diversity Committee for Hanover Park. We have done several events together, and we're looking for more events like this to come forward. So great job, Gurmeet. Thank you. I'm happy to be here with you all today. Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Consul General, and your better half, Surabi, is here as well. And Gurmeet, and your 16 associations, I believe, that have joined in. Huh? Well, 12? yes. Oh. You're going to Next be... year I'll do it more. No, you're going to be 16 by the end of the evening. Yes, thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you for including me today. I appreciate that. Thank you. It's nice. Thank you, thank you. And on behalf of the village of Oak Brook, I'm honored here to extend to you greetings for this beautiful celebration of your New Year today. As a matter of fact, when I was born and raised in Jakarta, Indonesia, every Sunday I used to go to Gurdwara. There was a reason for it, which I'm not going to tell you. But every Sunday I was raised in the Gurdwara atmosphere, so I'm familiar with this celebration, Vaisakhi. And I'm honored that village of Oak Brook and the residents of Oak Brook participating today on this beautiful, beautiful occasion. And as my friend here, I think he knows what I'm talking about. Waheguru, Waheguru, Waheguru. Raj Karega, Sindhi, at least in Oak Brook. At least in Oak Brook, yeah. But on a serious note, I like to wish you happiness, joy, peace, as well as prosperity in the coming year to you as well as the communities that you represent. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, good evening, ladies and gentlemen. This is Chaudhary Khokhar from Glendale Heights, a village of friendship and diversity. I believe in diversity, inclusiveness, and I believe my first Sikh girl is my executive secretary. She has been hired and she will start working next week. And please, we have jobs, and jobs are coming on merit, not on relationships. That is my motto and goals of Chaudhary Khokhar. God bless all of you. Thank you. Thank you, Mr. Khokhar. And can I please request Chandni to have Gurmeet ji present the bouquets to our dignitaries, to our elected officials. Thank you. And while we have our mayors on the stage, if there are MPA board members sitting in the audience, I would like to request them to join us on stage. And let me just read their names. Mr. Santosh Kumar, Mr. Brij Sharma, Mr. Anil Lumba, Paul Chawla, Mr. Saeed Hussaini, who is here with us, Mr. Neil Khote, Mr. Rajiv Sharma, Mrs. Asha Oroskar, Pradeep Singh, Parminder Singh Goldie, Tajinder Kaur Gill, Chandni Kalra, Mr. Nimish Jani, Mr. Khwaja, Mr. Onkar Sangha, Krishna Bansal. If we have any MPA board members who were able to join us, please come on the stage. Vikram Seth and Mr. Mandeep Kumar. All right. And can we have one representative from all the associations that have contributed to today's event? Can I have Devapriya or Sonali or one representative
from Bengali Association of Greater Chicago, Mr. Anurag Mishraraj from Dramatech, Mr. Rakesh Malhotra from Federation of Indian Associations, Punjabi Cultural Organization, Mr. Raj Lali Batala from Kalma de Angsang, Mr. Ali Khan from Urdu Samaj of Chicago, Guru Ladore Seva Society, Parminder Goldie, Savera team led by Mrs. Jasbir Kaur Man, Sanjeevni for You, Promila Kumar, Indian American Association, Nawabji, can you please join us on stage? Artists Association of North America, Fani Krishna and Naveen Karna, can we please have on the stage? Punjabi American Association, PAO Mr. Gulzar Multani, and Punjab Cultural Society, Mr. Parminder Nanwa. Can we have, or if they are not there, can we have one representative from each organization? And if we have representatives from Wheaton Gurudwara and Palatine Gurudwara, can we have you guys on the stage as well? Amrik Singh from Amar Carpet. Amrik ji, can I have you please on the stage? As you all know, these things are important. These things make our events possible. The sponsors, the supporters. No event is possible without the support and sponsorships. So thank you so much for your patience so far. The next presentation is about the activities and the executive board members of Midwest Punjabi Association. थोड़ा सा ही बोल दो ना, थैंक यू कर दो, सभी को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, बाकी इवेंट तो हम करते ही रहेंगे इसको हर साल, है ना। ठीक हो गया प्राची, गड़बड़ तो नहीं? अच्छा, अभी सर्टिफिकेट कंपनी ने क्या करना, पहले प्रोग्राम करके जो सारे वापस करेंगे। अच्छा, हो गया सारा? बोल दूंगा उसको वापस करें। सभी का नाम नहीं आया, हम क्या करेंगे, है ना, जो नहीं आया नहीं आया। लोगों का बाद में ही कर लेंगे। लोगों का क्या? लोगों का बाद में सबको इकट्ठा करके फोटो लेंगे। गड़बड़ तो नहीं? अच्छा, अभी सर्टिफिकेट कंपनी ने क्या करना, पहले प्रोग्राम करके जो सारे वापस करेंगे। अच्छा, हो गया सारा? बोल दूंगा उसको वापस करें। सभी का नाम नहीं आया, हम क्या करेंगे, है ना, जो नहीं आया नहीं आया। लोगों का बाद में ही कर लेंगे। लोगों का क्या? लोगों का बाद में सबको इकट्ठा करके फोटो लेंगे। And now I give it up. Please give it up for Mr. Gurmeet Singh Dhalwan. Gurmeet ji, say a few words. Sat Shri Akal, Namaste, Assalamu Alaikum, and good evening, all of you. Honorable Consul General Amit Kumar ji, Mrs. Surbhi Kumar ji, Honorable Mayor Dr. Lal Gopal Malani, Honorable Rodney Craig, Honorable Tom Daly, Honorable
Chaudhary ji, and entire elected officers, and entire our sponsor organizations. I would like to thank you to everyone being with me. I don't want to take so much time because we are already late. So thank you, everyone. Thank you. Next up, we have a cultural program, and it's like a religious invocation in the form of Gurbani Kirtan. Let's invoke the grace of the Almighty with Gurbani Kirtan by Bhai Jagat Singh Dilli Wale and Bhai Bhagat Singh Chicago Wale. Bhai Jagat Singh, he has devoted his life to music since he was 14. He dedicated his entire life to the cause, celebrating Sikhism through his beautiful melodious voice. He has also trained many famous vocalists all over the world. He has contributed in the field of music by serving at so many famous gurudwaras all over the world. Bhai Bhagat Singh is the chief mentor of Midwest Punjabi Association, steering the organization towards a bright future. Mr. Singh, who hails from Sikh family in the state of Rajasthan, has been working in the capacity of a priest in the United States for last 35 years. So please put your hands together for Bhai Jagat Singh and Bhai Bhagat Singh.
ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, प्रीत करो मन में, प्रीत करो मन में, प्रीत करो मन में। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। शिवा बर मोहे शुभ कर्म शिवा बर मोहे शुभ कर्म ते नटरो अरसो जब जाय नरो जय कर अपनी जीत करो। बोले सोने सारे कृपा करो। बोले सोने सीखो अपने ही मन को, लालच हो गुल तो उचरो। सीखो अपने ही मन को, ये लालच हो गुल तो उचरो। बोले सोने बोले सोने देह शिवा बर मोहे शुभ कर्म ते होना, शुभ कर्म ते होना। जब आव की औद निदान बने, जब आव की औद निदान बने, अधहीरण में तब जूझ मरो। बोले सोने बोले सोने देह शिवा बर मोहे शुभ कर्म ते कबहू, शुभ कर्म ते कबहू, शुभ कर्म ते कबहू। बोले सोने बोले सोने बोले सोने बोले सोने बोले सोने ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। That was beautiful. Thank you, sir, for leading this beautiful, melodious Gurbani Kirtan and setting the perfect tone to start today's program. We really appreciate you joining us and blessing the event with your melodious Kirtan. Thank you, everybody who joined us, and thank you all for your patience as well. And thank you for joining us in the Kirtan. Next up, we have a beautiful presentation by
one of the organizations who helped us in the program, Bengali Association of Greater Chicago. The massacre at Jallianwala Bagh had sent ripples of horror and shock all across India. When the news traveled to Shanti Niketan, which was the residential university of the Nobel laureate poet Rabindranath Tagore, it intensely anguished the poet. Rabindranath Tagore had always been a great admirer of the Punjabi ethos. He was therefore deeply disturbed by this horrific attack on the defenseless and non-violent crowd. Searching about for a gesture to register his protest against the British colonial rules, Tagore decided to return the knighthood that the rulers had honored him 5 years earlier. The letter written by the poet returning the title has been a notable document in the history of Indian freedom movement. Tonight, the Bengali Association of Greater Chicago will try to present to you through Rabindranath's poems and songs the admiration he had for the Sikh spirituality and their fearless patriotism, which finally culminated in that historical document. BAGC is a not-for-profit organization dedicating to preserving and promoting literature, art, music, and the rich religious and cultural heritage of Bengal. The participants today for the performance are Devi Priya Roy, Somen and Ranjita Chattopadhyay, Swagata De, and Bratashri Roy. Please put your hands together as we welcome the team from Bengali Association of Greater Chicago. Thank you. Please put your hands together. They have really worked very hard. It was the 30th of May, 1919, a month after the horrific massacre at Jallianwala Bagh. Lord Chelmsford, the then Viceroy of India, received a letter from the Nobel laureate poet Rabindranath Tagore. Your Excellency, the enormity of the measures taken by the government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position in British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized governments, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population disarmed and resourceless by a power which has the most terribly efficient organization for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. Thus began a distraught Rabindranath Tagore penning a protest letter to the then Viceroy of India, Lord Chelmsford, publicly repudiating the ugly, brutal violence visited upon his countrymen and renouncing the knighthood conferred upon him by the British. Hailed as the Vishwakavi, the poet who sang of the universe, Rabindranath used to affirm that his love for the universe sprang from his deep and passionate love he felt for his own country. So, the unimaginable brutality visited upon his defenseless countrymen had distressed him to the core. The fact that such brutality took place in Punjab grieved him further. Rabindranath had a genuine admiration for the Punjab ethos, the spirituality of the Sikh gurus who sang the glory of Alakh Niranjan, the one invisible, ineffable, ultimate reality deeply resonated within him, as he was himself brought up in the Brahma Samaj tradition, paying obeisance to Nirakar Parabrahma, the one ultimate formless reality. Deeply reverent to the one ultimate reality,
Rabindranath composed a beautiful hymn reflecting the sentiments of that famous Sikh arati, Gaganamay Ravichandra Thal Ravichandra Deepak Bane, Tarika Mangal Janak Moti. Composed by Guru Nanak. So spiritually inspiring was the song for Rabindranath that once, when he was asked by the veteran film actor Balraj Sahni as to why he had not composed an anthem for the entire universe, as he had composed the anthem for India, he had remarked that such an anthem had already been composed by Guru Nanak. That glorious hymn inspired Rabindranath to compose a similar hymn in Bengali, which sings the glory of the supreme divinity seated upon the world throne, while the sun and the moon perform arati in front of him. Rabindranath rightly perceived that the unbending valor of the Sikhs sprang from this deep spirituality instilled in them by their gurus. Rabindranath's niece, Sarla Devi Chaudharani, had married a Punjabi gentleman, Rambhut Chaudhary, and she used to bring him
many such tales of how the Sikhs stood up against any injustice unflinchingly. The poet who himself used to be morally outraged by any injustice felt deeply connected to the Sikh psyche. He was never a protagonist for violence, but he could not bring himself to forgive or deal with the unjust acts of a tyrannical ruler either. He had been deeply conflicted between forgiveness and armed resistance since his early life. The conflict was reflected in an earlier poem, Prosno. Despite the messengers of peace and love from the divine messengers, he told God he could not bring himself to forgive the vicious hypocrites who tortured the helpless and downtrodden, who put innocent youth behind bars and silenced their voices. Have you been able, he asked God, to forgive these people who poison your air and dim the light your universe? ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে দয়াহীন সংসারে তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে বলে গেল ভালোবাসো অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে আজি দূর দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে আমি যে দেখিনু গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে তাই তো তোমায় সুধাই অশ্রু জলে তাই তো তোমায় সুধাই অশ্রু জলে যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি পেশেছ ভালো No wonder then that the tales of bravery of the Sikhs in the face of injustice appeal to Ravindranath and form the theme of many of his poems. The depth of his admiration can be seen in Bondi Beer, a poignant and heart-rending poetic presentation of the struggle and sacrifice of the Sikhs against the Mughal atrocities. The poem starts with a description of how, by the 5 mighty rivers, the teachings of the Guru roused the fearless battle-ready Sikhs, and their battle cry of Waheguru, Guruji Joy, started echoing around the horizons, robbing the Mughal rulers of their sleep. পঞ্চ নদীর তীরে বেনি পাকাইয়া শিরে দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ নির্মম নির্ভীক
হাজার কণ্ঠে গুরুজির জয়, গুরুজির জয় ধনিয়া তুলেছে দিক, নতুন জাগিয়া শিখ, নতুন উষার পানে চাহিল নির্নিমিক। অলোক নিরঞ্জন মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়ে ভঞ্জন। বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে ওসি বাজে ঝনঝন, পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল অলোক নিরঞ্জন। এসেছে সে একদিন লক্ষ্য পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহার ঋণ। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। পঞ্চ নদীর তীরে ঘিরি 10 তীর, এসেছে সে একদিন। দিল্লি প্রাসাদ কুটে হোথা বারবার বাদশা জাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে। কাদের কণ্ঠে গগন মন্ত্রে নিবিড় নিশিত টুটে, কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে। পঞ্চ নদীর তীরে ভক্ত দেহের রক্ত লহরী মুক্ত হইল কিরে। লক্ষ বক্ষ চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান ছুটে যেন নিজ নীরে। বীরগণ জননীরে রক্ত তিলক ললাটে পড়ালো পঞ্চ নদীর তীরে। The battle was joined. The Sikhs and the Mughals were at each other's throats. Rivers of Sikh blood made the battlefield wet. Little flocks of birds, droves of Sikh lives flew up towards the heavens. মোঘল শিখের রণে মরণ আলিঙ্গনে কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আকরি দুই জনে। দংশন ক্ষত শোন বিহঙ্গ যুজে ভুজঙ্গ শনে। সেদিন কঠিন রণে জয় গুরুজির হাঁকে শিখ বীর সুগভীর নিঃসনে। মত্ত মোঘল রক্ত পাগল দিন দিন গরজনে। After a while, the Sikh general Vanda was imprisoned and taken to Delhi like a caged lion, while 700 of his soldiers marched behind in shackles, unafraid and with the glory of Guru on their lips. They were executed by the hundreds every day, each soldier more eager than the next to sacrifice his life in their Guru's service. গুরুদাসপুর গড়ে বান্দা যখন বন্দী হইল তুরানি সেনার করে। সিংহের মতো শৃঙ্খলগত বাঁধিল গেল ধরে দিল্লি নগর পরে। বান্দা সমরে বন্দী হইল গুরুদাসপুর গড়ে। সম্মুখে চলে মোঘল সৈন্য উড়ায় পথের ধুলি। ছিন্ন শিখের মুন্ড লইয়া বর্ষা ফলকে তুলি। শিখ 700 চলে পশ্চাতে বাজে শৃঙ্খল গুলি। রাজপথ পরে লোক নাহি ধরে বাতায়ন যায় খুলি। শিখ গুরু যায় গর জয় গুরুজির জয়, গুরুজির জয়। পরাণের ভয় ভুলি মুঘল ও শিখে উড়ালো আজিকে দিল্লি পথের ধুলি। পড়ি গেল কারাকারি আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তার লাগি তাড়াতাড়ি। দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দিরা সারি সারি। জয় গুরুজির জয় গুরুজির কহি শত বীর শত শির দেয় ডারি। The poem
ends with the heartbreaking description of how the captured Sikh general Vanda was ordered to stab his young son at the order of the cruel victors. The boy fearlessly recited Vaheguru as his father kissed and stabbed him to death. As those who were present fell silent and squeezed shut their eyes, Vanda was stoned to death with hot tongs. বন্দা তখন বাম বাহু পাশ জড়াইল তার গলে, দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে ছুরি বসাইল বলে, গুরুজির জয় কহিয়া বালক লুটাল ধরণী তলে। সভা হলো নিস্তব্ধ, বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক, সারাশির করিয়া দগ্ধ। স্থির হয়ে বীর মরিল না করি একটি কাতর শব্দ। দর্শক জন মুদিল নয়ন, সভা হলো নিস্তব্ধ, সভা হলো নিস্তব্ধ। Such ardent devotion to their Guru that led the Sikhs fearlessly fight injustice endeared them to Rabindranath. He himself had voiced his rebellion all his life against injustice and crimes against humanity through his poems and writings. He was extremely agitated to learn of the bloodbath of the innocent unarmed people. The news reached him a few days late because the British government had imposed a gag order on all news outlets in Punjab. It was the editor of the Tribune, Kalinath Ray, who secretly leaked the news to the trustee, Ruchiram Sahni. Sahni, in his turn, entrusted to Banwari Lal, a member of the Congress, the gory details of that day to pass on to Tagore. The poet couldn't sleep for several nights. Restlessly walking around, he searched about for a way to mount a concrete protest against such brutality. During the next few days, he contacted Mahatma Gandhi and Chittaranjan Das to organize and participate in protest marches. Disturbed though both of those leaders themselves were by the massacre, they refused to respond to the poet's request. They feared that another protest march would bring in further brutality against the marchers by the British. Rabindranath was sad and frustrated. This indecision would not leave the poet in peace. As he mentally suffered, he gradually reached a resolve to march forward by himself. To hesitate, to take action, fearing future catastrophe, he felt was an insult to one's own self. When duty calls, he declared, one should rise above all fears and answer the call. সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে হইও না ম্রিয়মান। সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে হইও না ম্রিয়মান। মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজের কর জয়। মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজের কর জয়। সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে হইও না ম্রিয়মান।
দুর্বলের রক্ষা করো দুর্জনের হানো নিজের দিন নিঃসহায় জনকে ভুনা জানো দুর্বলের রক্ষা করো দুর্জনের হানো নিজের দিন নিঃসহায় জনকে ভুনা জানো মুক্ত করো ভয় নিজের পর করিতে ভর নারী সংশয় মুক্ত করো ভয় নিজের পর করিতে ভর নারী সংশয় সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান সংকটের কল্পনাতে হইও না ম্রিয়মান And so this 58-year-old poet stood alone facing the mighty British Empire and threw down in scorn the greatest honor of that empire, knighthood, that had been conferred upon him 5 years ago. Knowing that our appeals have been in vain and the passion of vengeance is blinding the nobler vision of statesmanship in our government, which could so easily be magnanimous as befitting the physical strength and moral statesmanship. The very best that I could do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honor make our shame glaring in the incongruous content of humiliation. And I, for my part, wish to stand shorn of all special distinctions by the side of my countrymen who, by their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings. These are the reasons which have compelled me to ask Your Excellency, with due reverence and regret, to relieve me of my knighthood, which I had the honor to accept from Your Majesty, the King, at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration. ধর্ম যাবে সংগ্রামে করিবে আহ্বান নীরব হই নিশ্চয় শঙ্করীয় প্রাণ ধর্ম যাবে সংগ্রামে করিবে আহ্বান নীরব হই নম্র হই শঙ্করীয় প্রাণ মুক্ত কর ভয় দুর্বাজ নিজের দিও কঠিন পরিচয় মুক্ত কর ভয় দুর্বাজ নিজের দিও কঠিন পরিচয় সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান সংকটের কল্পনাতে হইও না ম্রিয়মান On behalf of Bengali Association, we thank all of you for letting us participate in this beautiful program. Beautiful presentation and a beautiful performance. Thank you, everyone. And now it's time to acknowledge and appreciate the participation and involvement of some very special people for today's event. And to present them the certificate, the appreciation certificate, can I please request Mr. Amit Kumar and Mrs. Surbhi Kumar on stage so that we can encourage our participants who were part of today's event. We can start with BAGC, Bengali Association. Thank you. We have some little kids who also participated in today's program through some video clips. Can I please request, if there is somebody, thank you everyone. Can I please request, I'll just say the names, and then if there are people who are still here and they were able to join, please make a quick way to the stage so that we can wrap up this session.
Ms. Shreya Kaur, Mr. Hardeep Singh, Sahib Singh, Anmol Singh, Shreya Kaur. Please encourage them, ladies and gentlemen. Hardeep Singh, Chani. Sahib Singh. And that's the proud parents of Sahib Singh and Anmol Singh. Thank you, parents, for joining us. And it's time to appreciate the performers of tonight, which is Shivali Varshane Tanner, Mr. Rakind Kaur, Mr. Rajlali Batala, Rakind, that's Shivali, Rakind Kaur, Rajlali Batala, that's Rakind Kaur. Please put your hands together for these guys. They have been working very hard for today's event. They need this kind of encouragement. Thank you. Mr. Rajlali Batala, one of the finest poets we have seen. Mr. Rakesh Malhotra, a fine poet leading FIA. Mr. Anurag Mishra-Raj from Drama Tech of America. Mr. Anurag. Hello, sir. Mr. Tawfiq Ansari Ahmed, another beautiful poet. Hello, sir. Sir, please. Mr. Charandeep Singh, the genius behind today's presentation, Khuni Vaisakhi, that is coming up next. मेरा नाम आप अनाउंस कर दो. Hello. मिस्टर चरणदीप सिंह, जब आप अपना लेके आ जाइए ना तो फिर मैं आपको माइक दे दूंगी. हाँ ठीक है. इनको सर्टिफिकेट हो गया. अच्छा ठीक है फिर. हाँ वही. Hello. क्या नहीं वो हाँ जी कोई बात नहीं. Can we quickly have our sponsors on stage, please? If we have them, Dr. Vikram Gill, Mr. Lucky Sahota, Mr. Amrik Singh from Amar Carpet, Mr. Iftikhar Sharif, Mr. Jesse Singh from Remax, and I see Amrik ji here. Mr. Amrik Singh from Amar Carpet, Mr. Jesse Singh from Remax, Mr. Syed Hussaini, he was here, we know that, from Standard Home Care. Mr. Puneet Sani, if he's here. Mrs. Chan, Northwestern Realty. And Mr. Anil Kalra, can we have you on stage, please? They have supported the event a lot. We really appreciate your support. Can we have the representatives of Sant Nirankari Mission, please? Punjabi Cultural Organization, Michigan. If we have any representatives from these organizations, please join us on stage. Mr. Ali Khan from Urdu Samaj of Chicago. Hello. Ali ji, wait. 2 minutes wait. अच्छा तो मैं रुक जाता
Mr. Ali Khan from Urdu Samaj of Chicago. Ek second. Nawabji from Indian American Association and Mr. Shahid Razvi. Punjabi Americans Organization PAO, Mr. Gulzar Multani and Miri Multani, can we have you on the stage? Gulzar Singh Multani and Miri Multani from PAO. Punjabi Cultural Organization, Chicago. Artists Association of North America, Mr. Fani Krishna and Naveen Karna. Fani, please. That's absent. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for your patience. I know this takes forever. Special guest who I see joined us. I see Mr. Krishna Bansal who has joined us. Thank you, Krishna, for joining. And a very special thank you to Punjab Times and all our media partners as well. Asian Media, Suresh Bodiwala and Urvesh Thakkarji, thank you so much. Thank you, Hanif. All right, another beautiful performance that is upcoming that has been compiled by the finest poets and writers and genius minds. Can I have your attention, please, ladies and gentlemen? We are about to start our next performance. Before we do that, the next video that you guys are going to watch is by Navdeep Suri. Navdeep Suri is the grandson of Sardar Nanak Singh, whose poetry we are going to be celebrating today for the event. Navdeep Suri is a retired Indian diplomat completing distinguished 36 years in the Indian Foreign Services. He has served in India's diplomatic missions in Cairo, Damascus, Washington, Dar es Salaam and London, and also India's Consul General in Johannesburg. His English translation of grandfather Nanak Singh's classic Punjabi novels have been published by Penguin as The Watchmaker and by HarperCollins as A Life Incomplete and Khuni Vaisakhi. Here is a video message by Mr. Navdeep Suri. Time today to discuss about my grandfather Nanak Singh novelist and about his famous long poem, Khuni Vaisakhi. Nanak Singh Ji was born as Hansraj in 1897 in the family of Father Suri, a Hindu family, in the Jatpuri village in Jidam district. He had no formal education beyond the 4th or 5th grade. But early in his years in Peshawar, he discovered that he had a certain flair for poetry and for putting verses together. And it was during this period in Peshawar that he also came under the influence of a very pious. You would actually call them hymns or songs in praise of the Sikh gurus. This was Satguru Mahima, published in 1918, and it became a runaway success and earned him the title of Nanak Singh Kavishar. He came to Amritsar, and in 1919 he went to Jallianwala Bagh with two of his friends to protest against the infamous Rowlatt Act. And of course we know that April 13th, 1919, General died fired his troops, and my grandfather's two friends were both killed
Jallianwala Bagh massacre. And Charandeep ji, thank you so much for working so hard. Sound? Oh, careful. ये लो जी। Jallianwala Bagh massacre is the darkest day in the history of India's independence struggle. How many times have you heard this tragic story from your parents, grandparents, or teachers? There is a great reason to present it again on this stage. Our inspiration is a young poet who is an eyewitness of this whole saga himself. He was attending the infamous gathering protesting the Rowlatt Act at Jallianwala Bagh. And suddenly, without any warning, when the shooting started, he was buried alive under the big pile of dead bodies. These shaheeds saved his life so that he could describe the most horrible incident with his blood-drenched pen. The day after shooting down over 1,000 men, women, and children by the orders of General Dyer, people of Amritsar disobeyed imposed curfew and rushed to the Bagh to take care of wounded, dying brothers and sisters and children. As they pulled this 22-year-old young man alive, he stood there, shocked. What he observed standing there, he put his heart-wrenching experience in words. Let's listen to what he saw. Sound. हेलो हेलो कविता ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਕ ਕਵੀ नवीन ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਯਾਰੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਯਾਰੋ। ਦੀਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਤਾ ਕੱਲ ਟਹਿਕਿਆ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਤਾ ਕੱਲ ਟਹਿਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਲ ਯਾਰੋ, ਅੱਜ ਉਸ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਲ ਯਾਰੋ। ਜਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ ਨਕੇਲ ਯਾਰੋ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ ਨਕੇਲ ਯਾਰੋ। ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਵੇਲ ਯਾਰੋ। ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਵੇਲ ਯਾਰੋ। ਕੱਲ ਹੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ, ਕੱਲ ਹੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ ਨਕੇਲ ਯਾਰੋ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ ਨਕੇਲ ਯਾਰੋ। ਪੰਛੀ ਆਲਣੇ ਚੋਂ ਜਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਆਲਣੇ ਚੋਂ ਜਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਵਜੀ ਗੁਲੇਲ ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਵਜੀ ਗੁਲੇਲ ਯਾਰੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਤਾਵਣਾ ਖੇਲ ਯਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਤਾਵਣਾ ਖੇਲ ਯਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਤਾਵਣਾ ਖੇਲ ਯਾਰੋ ਕੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਕਹੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿਨ ਕਹੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਮੰਡੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋ ਮੰਡੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠਾਈ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਡਾਢੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਸਾਰੇ ਡਾਢੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਕਦਾ ਅੱਜ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਲਾਡਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣੇ ਹਾਏ ਲਾਡਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣੇ ਧੁੱਪੇ ਪਏ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਪਏ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਰੋ ਆਏ ਅੱਜ ਦਿਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਰੋ ਆਏ ਅੱਜ ਦਿਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਦੇ ਆਣ ਲਾਏ ਮਾਨੋ ਜਾਵਣਾ ਕਦੇ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋ ਜਾਵਣਾ ਕਦੇ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਠਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਠਾਹ ਨਹੀਂ This poem that sketches the true picture of the times is from the compilation of 25 poems in the booklet called Khuni Vaisakhi. This was this 22 years young man's eyewitness account that he wrote after Jallianwala Bagh massacre. His name is Sardar Nanak Singh. Despite his impoverished background and limited education, he was a very prolific writer.
he got a lot of fame as a novelist, Nanak Singh, who wrote several novels and short stories and got national recognition and honored by the Government of India in 1962 with Sahitya Akademi Award. ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਹੋਵਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਗ ਛੇਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਗ ਛੇਤੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਸੌਂਵਣਾ ਸੀ, ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆਂ ਲੰਮੜੇ ਰਾਹ ਪਿਓ, ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆਂ ਲੰਮੜੇ ਰਾਹ ਪਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਵਣਾ ਸੀ, ਰਤਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦੋ, ਰਤਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦੋ, ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਚਾਈ ਖਲੋਵਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਬੱਚਾ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝਾਟੋਵਣਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪਰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪਰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੋਵਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੋਵਣਾ ਸੀ। Justin Rowlatt, the grandson of author of the repressive law Rowlatt Act, visited Jallianwala Bagh. This was the law that suppressed civil liberties and was the reason for the protest at the Jallianwala Bagh. He was personally accompanied on a private tour of the fateful place by Bengali gentleman Sukumar Mukherjee, the chairman of Jallianwala Bagh. Interestingly, grandfather of Sukumar, Shashti Charan Mukherjee, was also the eyewitness of that dreadful day. April 13, 1919. He saw Brigadier General Dyer troops marching through narrow lane. He saw them bring out their rifles to their shoulders and aim at the crowd. Then without warning, they opened fire. Shashti hid behind the stage to save his life. He told his grandson that it took only 10 minutes to have unbelievable bloodshed, losing over 1,000 lives, left so many wives crying for their dead husbands. ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਨਾਰਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਾਰਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਪਤੀ ਅੱਜ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਪਤੀ ਅੱਜ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਵਣ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਵਣ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੀਤਾ ਰੋਵਦੀ ਨੂੰ ਪਰਬਾ
सीता रोम दीनू प्रभात होई श्याम प्यारिया पंसरी सुट बैठा श्याम प्यारिया पंसरी सुट बैठा हाय अज कही चुप चाप होई हाय अज कही चुप चाप होई कागज दिल ते हड्डां दी कलम कड़ के कागज दिल ते हड्डां दी कलम कड़ के खून शाही ते जिगर दवात होई खून शाही ते जिगर दवात होई नानक सिंह नारज के मुख डिठा नानक सिंह नारज के मुख डिठा अजय राज के ना गल बात होई अजय राज के ना गल बात होई Indeed, those were very atrocious and hard times for people of India. But people had to get together and think about their class, color, creed, or religion to achieve the common goal. And in those days, the common goal was independence from the British Empire. That was the bright side of the history. April 9, 1999 was Ram Navami, birth of Lord Rama. And it was a beautiful picture of communal harmony. Hindus were drinking water touched by Muslims and they were joining the religious processions happily. Movements like Singh Sabha and the Arya Samaj were doing the valuable work by awakening consciousness and sowing the seeds of independence. Ultimately, the poems of Khuni Vaisakhi became the picture of the public that had risen above division of religion and caste and was expressing its united opposition to the foreign rulers. Nanak Singh once wrote, "If anything hurts my society, my humanity, it hurts me." Don't we all need leaders and guides now to write something, say something, set example to have a harmonious society, city, country, and why not the whole world? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਜਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਜਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਕਾਰ ਲੋਕੋ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਕਾਰ ਲੋਕੋ ਮੇਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਿੰਦ ਤਾਈਂ ਮੇਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਿੰਦ ਤਾਈਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕੋ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੁਸਾਂ ਵਰਗੇ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੁਸਾਂ ਵਰਗੇ
ਜਾਣਦੇ ਐਸ਼ ਬਹਾਰ ਲੋਕੋ ਐਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਐਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਵਾਰ ਲੋਕੋ ਛਾਤੀ ਡਾਕੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਚਾਂਦ ਮਾਰੀ ਛਾਤੀ ਡਾਕੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਚਾਂਦ ਮਾਰੀ ਲਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲੋਕੋ ਲਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਣ ਵੇਖੋ ਛੇਕ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੋ ਛੇਕ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਪਾਲਿਆ ਕਾਲ ਕਰਾਰ ਲੋਕੋ ਚੰਗਾ ਪਾਲਿਆ ਕਾਲ ਕਰਾਰ ਲੋਕੋ ਹੋ ਕੋਠੇ ਚਾੜ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਕੋਠੇ ਚਾੜ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਚੰਗੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕੋ ਚੰਗੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲੋਕੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭੇ ਗਫਲਤਾਂ ਦਿਓ ਵਿਸਾਰ ਲੋਕੋ ਸਭੇ ਗਫਲਤਾਂ ਦਿਓ ਵਿਸਾਰ ਲੋਕੋ ਬਣੋ ਮਰਦ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਬਣੋ ਮਰਦ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਕਰਾਰ ਲੋਕੋ ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਕਰਾਰ ਲੋਕੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ
निसार लोको क्यों ना देश तो होवे निसार लोको क्यों ना देश तो होवे निसार लोको जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद थैंक यू I don't think that was enough. Please put your hands together for these wonderful, creative minds working so hard for so many days, presenting this beautiful compilation. Charandeep ji, thank you so much for your guidance. Thank you. Let me call Mr. Charandeep Singh ji on stage. Ranjit ji, can we have you on the stage as well? The team has been passionately working for this performance. We have another beautiful performance right in front of you here. The coordinator of our next session, which is a poetry session again. And the session will be coordinated by Mr. Raj Lali Batala. His real name is Raj Sharma. He's from Batala, Punjab, now in Chicago. He has hosted Kalma De Ang Sang literary program on British Punjabi TV. He has also emceed many literary programs, including the recent International Mother's Language Day. He has authored 2 books, Ghazal Collection in 2017 and Surja Vi Surja by a poetry collection in 2020. He is a mechanical engineer specializing in medical devices, and he holds an MS degree in mechanical engineering from Chicago. Please put your hands together, Mr. Raj Lali Batala, and he will be steering and coordinating the entire poetry session. Thank you. And I will get a break. Maybe I'll grab food for myself. Thank you, ladies and gentlemen. So, for everyone, this is a poetry session, and मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेशन जो है बेसिकली उन शहीदों के नाम समर्पित है जिन लोगों ने अपनी जानें दी हमारे लिए. तो we would love to have your attention for this poetry session. We have 6 very fine poets from Punjabi, Hindi and Urdu. तो एक फूलों का गुलदस्ता है आज हमारे पास, ठीक है ना. और मुझे यकीन है कि अगर आप सुनोगे ध्यान से जो ये पोएट यहां बोलेंगे तो उनके मायने आपको ताउम्र याद रहेंगे. शुरू करने से पहले 2 अशियार शहीदों के नाम आप सबने सुने होंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले. वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. आई थिंक ताड़ी उस हद तक नहीं है जहां तक आनी चाहिए थी उन शहीदों के नाम. शुक्रिया प्लीज. और द वेरी फर्स्ट पोइट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज. उनका नाम किसी भी परिभाषा का मोहताज नहीं है. अगर हिंदी में बात करें तो उनका नाम है अनुराग मिश्रा राज जी. ही इज फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामा टेक ऑफ अमेरिका. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो स्टाफ क्रिटिक हैं, पोइट्री लिखते हैं, नाटक मंचन करते हैं, और बेसिकली आई वुड से कि अ बिग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर, टू हिंदी पोइट्री, टू हिंदी ड्रामा. और हमारी खुशी है कि वो आज हमारे बीच में हैं. उनके 2 अशियार आपकी नजर करता हूं कि चाहत में जिसकी लुटाए थे खजाने कितने. चाहत में जिसकी लुटाए थे खजाने कितने, उसी ने ढूंढ लिए हैं ना मिलने के बहाने कितने. उसी ने ढूंढ लिए हैं ना मिलने के बहाने कितने. मिल भी जाए शायद हमें
मिल भी जाए शायद हमें भी दिलबर और कोई, मिल भी जाए शायद हमें भी दिलबर और कोई, ढूंढ पाएगा वो चमन में हम जैसे दीवाने कितने, ढूंढ पाएगा वो चमन में हम जैसे दीवाने कितने. सो प्लीज बिग हैंड अनुराग मिश्रा राज. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई. आप सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. मुझे इस महफिल में शिरकत करने की इजाज़त देने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. चूंकि आज का मौका शहीदों की याद का है, ये साल ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह हमारी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है. आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का महोत्सव चल रहा है. 75 साल लगभग एक आदमी की जिंदगी बीत जाती है. तो आज के लोग कितना जानते हैं उन शहीदों के बारे में, उस जज्बे के बारे में जिसने उन्हें आजादी की लड़ाई में पहुंचाया. ऐसे अन्य हजारों अनाम शहीद हैं जो अपना सब कुछ निछावर करके इस लड़ाई में कूद पड़े थे. मेरे अपने नाना अपनी जवानी के 19 साल जेल में बिता चुके इसी लड़ाई में. पर आज के लोगों के दिल में जो जज्बा है उस पर मैंने एक कविता लिखी है, आशा आपको पसंद आएगी. इसका शीर्षक मैंने रखा है, कैसे थे वो लोग जो आम आदमी आजादी की लड़ाई में थे, कैसे थे वो लोग. तो पेश करता हूं. फख्र करते हो जिस पर आज तुम अपना हक जताने में, फख्र करते हो जिस पर आज तुम अपना हक जताने में, पाई थी वो आजादी उन्होंने अपनी जान पे खेल जाने में. फख्र करते हो जिस पर तुम आज अपना हक जताने में, पाई थी वो आजादी उन्होंने अपनी जान पे खेल जाने में. अजब थे मतवाले वो निकल पड़े थे जो पहनकर बसंती चोला, अजब थे वो मतवाले निकल पड़े थे जो पहनकर बसंती चोला. न सोचा आगा या पीछा और ना आए किसी के समझाने में. मिली थी जिंदगी उनको फांसी के फंदे में झूल जाने में, मिली थी जिंदगी उनको फांसी के फंदे में झूल जाने में. मौत लगती थी बस उनको अन्याय के आगे सर झुकाने में. मिली थी जिंदगी उनको फांसी के फंदे में झूल जाने में, मौत लगती थी उनको बस अन्याय के आगे सर झुकाने में. कर दिया निछावर उन्होंने अपना सब कुछ और घर परिवार, कर दिया निछावर उन्होंने अपना सब कुछ और घर परिवार. आजाद भारत का हमारा एक सपना सच बनाने में. काला पानी सलाखें और जंजीरें थी बस उनकी रहबर, काला पानी सलाखें और जंजीरें थी बस उनकी रहबर. हिचके नहीं जो घड़ी भर को भी जवानी जेल में बिताने में. खाई थी ढेरों लाठियां और गोलियां भी अपने सीनों पर, खाई थी ढेरों लाठियां और गोलियां भी अपने सीनों पर. करेंगे या मरेंगे का ऐसा कुछ जज्बा था उनका कुछ कर दिखाने में. खाई थी ढेरों लाठियां और गोलियां भी उन्हें अपने सीने पर, करेंगे या मरेंगे का ऐसा जज्बा था उनका कुछ कर दिखाने में. और ये सब किस लिए? देखा था ये सपना उन्होंने बनाएंगे अनूठा एक देश अपना. देखा था ये सपना उन्होंने बनाएंगे अनूठा एक देश अपना. आजादी इंसाफ और भाईचारे की बने मिसाल सारे जमाने में. देखा था ये सपना उन्होंने बनाएंगे अनूठा एक देश अपना. आजादी इंसाफ और भाईचारे की बने मिसाल सारे जमाने में. बस इसी एक सपने उन्हें ताजिंदगी रात भर सोने न दिया. बस इसी एक सपने ने उन्हें ताजिंदगी रात भर सोने न दिया.
अब बरस बीत जाते हैं यहां पर हम लोगों को जगाने में। आज के जमाने बस इसी एक सपने ने उन्हें ताजिंदगी भर रात भर सोने न दिया। अब बरस बीत जाते हैं यहां पर हम लोगों को सोते से जगाने में। लड़ते फिरते हो आज बस अपने भाइयों से यूं ही तो हरदम। आज जो हमारी आपस की लड़ाइयां स्क्वाबल्स चलती हैं, लड़ते फिरते हो आज बस तुम अपने भाइयों से यूं ही हरदम। झिझकते नहीं जरा तुम भी इंसान का लहू बहाने में। याद कर लो जरा एक बार उनको भी कभी, कैसे थे वो लोग। याद कर लो उनको एक बार भी कभी, कैसे थे वो लोग। कर दी थी कुर्बान जिन्होंने अपनी जिंदगी हमारा मुल्क बनाने में। याद कर लो जरा एक बार उनको भी कभी, कैसे थे वो लोग। कर दी थी कुर्बान जिन्होंने अपनी जिंदगी हमारा मुल्क बनाने में। आशा आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुराग जी, अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। और मुझे पता ये टाइमिंग थोड़ी सी ऑड होती है कई बार, कि जब खाने की बात होती है तो फिर हम लोग कुछ नहीं देखते। तो दैट्स फाइन, हम जो बेसिकली शो मस्ट गो ऑन। इससे आगे द नेक्स्ट पॉइंट जो बुला रहा हूं मैं पंजाबी से, वेरी यंग पोइटेस पंजाबी की फ्रॉम इंडियाना, और उनकी एक किताब आ चुकी है राकेंद ख्यालां दी पुन्या 2012 विच। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਕੇਂਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ, और एक गुजारिश है कि प्लीज गिव बिग हैंड्स टू द यंग पोएट्स प्लीज, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, अगर हमारा फ्यूचर इन्हीं से चलेगा। सो थैंक यू सो मच राकेंद्र, प्लीज। Thank you everyone for being here to commemorate the Jallianwala Bagh massacre. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, when we are served food, our focus is generally on food। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। But I would appreciate it if everybody in the line for food would actually pay attention to my voice. You don't have to pay attention to me by face, that's okay. I don't want anybody to spill anything on anyone, but I would really appreciate if I could have your ears. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਲਿਖੀ। We heard earlier different perspective that Nanak Singh wrote from, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ inspiration ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਬੰਦੂਕ। And it's from the perspective of the gun, of the actual rifle that was shooting at or being aimed to be shot at all the people in Jallianwala Bagh. सिपाही ने बंदूक चलाई, सिपाही ने बंदूक चलाई पर कोई गोली बाहर ना आई। सिपाही ने बंदूक चलाई पर कोई गोली बाहर ना आई। उन्हें दूजी बंदूक चुकी, उन्हें दूजी बंदूक चुकी पर फिर ना कोई चिंगारी निकली, ना कोई गोली बाहर आई। ना कोई चिंगारी निकली, ना कोई गोली बाहर आई। सिपाही गुस्से च बुड़बुड़ाया, इन्हां बंदूकां नूं किने बनाया। सिपाही गुस्से च बुड़बुड़ाया, इन्हां बंदूकां नूं किने बनाया। इह सुन के बंदूक बोली, इह सुन के बंदूक बोली, मैं तेरे जही बुजदिल नहीं, मैं तेरे जही बुजदिल नहीं, जो मां दी गोद विच दुध चुंगदे नियाणे नूं जा वज्जा।
मैं तेरे जही बुजदिल नहीं जो मां दी गोद विच दुध चुंगदे न्याणे नूं जा वज्जा दुश्मन वल दा के वेख मैं किंज सीना छली कर सकदी हां दुश्मन वल दा के वेख मैं किंज सीना छली कर सकदी हां मैं तेरे जही कायर नहीं मैं तेरे जही कायर नहीं जो हथे बेदोशां दा लहू वहा सकां मैं तेरे जही कायर नहीं जो हथे बेदोशां दा लहू वहा सकां मैं किरतियां दे हथों बनी खुददार बंदूक हां मैं किरतियां दे हथों बनी खुददार बंदूक हां तेरे जही गुलाम हथियार नहीं मैं किरतियां दे हथों बनी खुददार बंदूक हां तेरे जही गुलाम हथियार नहीं मैं बेजान होके भी नैतिक हां मैं बेजान होके भी नैतिक हां ते तू मनुख होके भी मनुख नहीं तू मनुख होके भी मनुख नहीं पर जिद्दां साडे कांग्रेसमैन जिहड़े आए सी उन्हां ने कहा that what happens history repeat itself when we don't remember it what's happening in Ukraine what's happened in Palestine what's happened in Afghanistan Iraq we go back to like before partition India everywhere when all these massacres happen the same history is repeated and I said these two words once ke पहला भी जंग ऐलानिया पहला जंग राजे ऐलानिया करते सन पहला भी जंग राजे ऐलानिया करते सन हुण भी जंगा देशां दे मुखी ऐलानदे ने पर इन्हां जंगां दे नतीजियां पहला भी आम लोग ही मारे जाते सन इन्हां जंगां दे नतीजियां पहला भी आम लोग ही मारे जाते सन ते हुण भी आम लोग ही मारे जाते ने ते साडे अर्गे जेडे आम लोग ने the common people when we don't pay attention to what's happening around us that's when all of these massacres repeat themselves and it is up to us and it is up to our poets like Nanak Singh, like Rabindranath Tagore to pick up their pens and make us wake up. Te mere Nana ji kahaniyan sunande san, all our grandparents, that's like a tradition in our culture ke raati soਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਉੱਤੋਂ ਪਈ ਰਾਤ ਜਾਗ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि इन्नी मेरी बात हो गई कनेरी रात इन्नी मेरी बात हो गई कनेरी रात हुण तां जाग जाओ सारे and with that I'm thankful to everyone for listening again thank you again Thank you Rakim thank you so much wonderful poetry I would request everybody again please be maintain the silence please और एक ना उर्दू का अशियार है बड़ा कमाल का कि उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पर रंगत उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पर रंगत वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है सो हमारी हालत अभी बीमारों वाली है क्योंकि लोग अभी बैठे नहीं टेबल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आ जाएं खाना लेकर टेबल पे ठीक है जी उससे आगे चलते हैं हम I would always say कि जो उर्दू की पोइट्री है उसका एक अलग एक मुकाम है एक पहचान है और we have the honor to have two very fine well known Urdu poets here in this evening जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं उनका नाम है डॉक्टर अफजल उर रहमान अफसर प्लीज गिव बिग हैंड नागपुर महाराष्ट्र इंडिया से हैं ही इज वेल नोन उर्दू पोइट और बाबे सुखन नाम की संस्था के तहत उर्दू मुशायरे करवाते रहते हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं उस तरफ भी अगेन आई वुड से वन मोर टाइम प्लीज मेंटेन साइलेंस प्लीज और एक अशार उनका आपकी नजर के बुलबुल की नए बाग में बुलबुल की नए बाग में नगमा जनी है परदेश में रहते हुए
हुब्बुल वतनी है, परदेश में रहते हुए हुब्बुल वतनी है, वो जिसके दिल में मोहब्बत है वतन की, वो जिसके दिल में मोहब्बत है वतन की, अफसर वही इंसान मुकद्दर का धनी है, अफसर वही इंसान मुकद्दर का धनी। सो प्लीज गिव बिग हैंड्स टू डॉक्टर अफसर प्लीज। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं मिडवेस्ट पंजाबी एसोसिएशन, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया शिकागो और ख़ास तौर पे रंजीत सिंह साहब का और राज लाली बटाला साहब का शुक्रगुजार हूं कि मुझे यह मौका फराहम किया गया है। और मैं एक कथा आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद में एक गज़ल के चंद अशआर तवज्जो चाहूंगा हजरात व ख़वातीन। आज़ादी के अमृत की है खुशबू इसमें, आज़ादी के अमृत की है खुशबू इसमें, लेकिन है हम सब लोगों के आंसू इसमें, लेकिन है हम सब लोगों के आंसू इसमें। उत्तर दक्कन पूरब पश्चिम वालों देखो, जालियां वाला बाग का है लहू इसमें, जालियां वाला बाग का है लहू इसमें। एक गजल के चंद अशआर है। बुलबुल की नए बाग में यूं नगमा जनी है, ये हम लोगों पे फिट होता है। हम लोग यहाँ अमेरिका में है, लेकिन हमारा जो वतन है वो इंडिया है, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें जोड़ा था। बुलबुल की नए बाग में यूं नगमा जनी है, परदेश में रहते हुए हुब्बुल वतनी है, परदेश में रहते हुए हुब्बुल वतनी है। क्या बात है किस चीज से खाइफ है जमाना, क्या बात है किस चीज से खाइफ है जमाना, क्या फिक्र है सीने पे जो नेज़े की अनी है, क्या फिक्र है जो सीने पे नेज़े की अनी है खाक इसी खाक में मिल जाएंगे एक दिन, है खाक इसी खाक में मिल जाएंगे एक दिन, जिस खाक से इस खाक की तस्वीर बनी है, जिस खाक से इस खाक की तस्वीर बनी है। ये उम्र की घड़ियाल तो चलती ही रहेगी, ये उम्र की घड़ियाल तो चलती ही रहेगी, जो दिल में ठनी है सो ठनी है सो ठनी है, जो दिल में ठनी है सो ठनी है सो ठनी है। मिल जाए अगर वक्त तो कर लेंगे बसेरा, रंजीत सिंह साहब तवज्जो चाहूंगा। मिल जाए अगर वक्त तो कर लेंगे बसेरा, ठहरेंगे वहां जाके जहां छांव घनी है, ठहरेंगे वहां जाके जहां छांव घनी है। पानी की कहां आतिश उल्फत को है परवाह, पानी की कहां आतिश उल्फत को है परवाह, ये आग जो अंदर से लगी है वो लगी है, ये आग जो अंदर से लगी है वो लगी है। ये शेर हम सब पे फिट होता है। हम जान लुटा देंगे अगर वक्त पुकारे, हम जान लुटा देंगे अगर वक्त पुकारे, हम देश पे जा देंगे यही जी में ठनी है, हम देश पे जा देंगे यही जी में ठनी है। वो जिसकी सदा दिल में मोहब्बत है वतन की, वो जिसके सदा दिल में मोहब्बत है वतन की, अफसर वही इंसान मुकद्दर का धनी है। बुलबुल की नए बाग में यूं नगमा जनी है, परदेश में रहते हुए हुब्बुल वतनी है। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू अफसर भाई, थैंक यू सो मच। और इससे आगे चलते हुए जो अगला नाम है वो हिंदी साहित्य में एक अहम नाम है, उनका नाम है राकेश मल्होत्रा।
राकेश मल्होत्रा जी प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, आल्सो नोन एज FIA. ही इज आल्सो फाउंडर ऑफ 5 ग्लोबल वैल्यूज शिकागो. तो उनका मैं कहता हूं कि एक योगदान है हिंदी में. उनकी एक लिखी हुई किताब है एडवेंचर ऑफ टोर्नेडो किड्स. इट इज 5-star रेटिंग ऑन amazon.com. तो शिकागोलैंड में अपनी वाइफ डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा और बेटे के साथ रहते हैं और हमको गर्व है कि वो आज हमारे बीच में हैं. उनका एक चंद लाइनें आपकी नजर तिरंगे की ओर से कि तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है. तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है. अखंड भारत की आन बान और शान है तिरंगा. अखंड भारत की आन बान और शान है तिरंगा. ये शहादत की पहचान है, सम्मान है जवान का. ये शहादत की पहचान है, सम्मान है जवान का. ये निशान है शहीदों के अमर बलिदान का. ये निशान है शहीदों के अमर बलिदान का. सो प्लीज वेलकम, गिव बिग हैंड्स, राकेश मल्होत्रा जी. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम. आज की महफिल में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का और मेरे जैसे आम व्यक्ति का सबका बहुत बहुत स्वागत है. मिडवेस्ट पंजाबी एसोसिएशन का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया. काउंसलेट जर्नल ऑफ इंडिया जिन्होंने इसको सपोर्ट किया. रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और एक ही रूफ के अंदर सबको इकट्ठा कर दिया. राज जी, परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ लम्हे जिंदगी से गुजर जाते हैं, कुछ लम्हे जिंदगी से गुजर जाते हैं और कुछ लम्हों में जिंदगी गुजर जाती है. तो आज की ये शाम बहुत ही अजीज है और इसको यादगार बनाने यही मेरी दुआ है. और अनुराग भाई ने शहीदों से शुरू किया था तो कुछ लाइनें मैं शहीदों पे बोल देता हूं कि कर्ज तुम्हारा कभी हमसे उतारा ना गया. कभी कर्ज तुम्हारा हमसे कभी उतारा ना गया. तुमने जो सोचा था वो हमसे विचारा ना गया. कर्ज तुम्हारा हमसे कभी उतारा ना गया. तुमने जो सोचा था वो कभी हमसे विचारा ना गया. तुमने तो खुद को कुर्बान कर दिया देश की खातिर. तुमने तो खुद कुर्बान कर दिया देश की खातिर. हमसे तो अहम अपना भी उतारा ना गया. हम भारत से बाहर रहते हैं लेकिन भारत हमारे दिल में रहता है. और भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है. भारत जीता जागता एक इंसान है जिसमें हम सब, जिसकी रगों में हम सब का खून दौड़ता है. और भारत को जो हमसे जोड़ता है वो कोई ब्रांड नहीं है, वो है तिरंगा. और तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है. तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है. अखंड भारत की आन बान और शान है तिरंगा. ये शहादत की पहचान है, ये शहादत की पहचान है. सम्मान है जवान का. ये निशान है शहीदों के अमर बलिदान का. तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है. ये भाईचारा है जो भारत के दिल में रहता है. ये भाईचारा है जो भारत के दिल में रहता है. ये परचम है सद्भावना का मार्ग दिखाता है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक गर्व से लहराता है. तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है.
ये शंखनाद है, ये शंखनाद है मेरे भारत महान का, ये शंखनाद है मेरे भारत महान का। निहित इसमें है, निहित इसमें है, निहित इसमें है पावन मिट्टी मातृभूमि की, निहित इसमें होती है पावन मिट्टी मातृभूमि की, सुगंध जिसकी पवित्र जीवन को कर देती है, सुगंध जिसकी पवित्र जीवन को कर देती है। रंग और जंग, रंग और जंग ना हमारी संस्कृति है ना हमारी सभ्यता है, लेकिन तिरंगे के तीनों रंग हरियाली से बौछार सावन की होती है, हरियाली से बौछार सावन की होती है। केसरिया किरणें, केसरिया किरणें रगों में जोश भर देती हैं। शांति की निशानी, शांति की निशानी सफेदी इसकी होती है। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। नदियां भी हमारी, नदियां भी हमारी, नदियां भी हमारी तिरंगे को शीश नवाती हैं, नदियां भी हमारी तिरंगे को शीश नवाती हैं। सम्मान में इसके, सम्मान में इसके गंगा जमुना सरस्वती संगम से अपने खुद तिरंगा बन जाती हैं। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये जीवंत किरदार है, ये जीवंत किरदार है स्वतंत्रता के हर सेनानी का, ये जीवंत किरदार है स्वतंत्रता के हर सेनानी का। ये अदम्य साहस है, ये अदम्य साहस है झांसी की रानी का। ये जोश है आजाद की सरफरोश जवानी का। ये प्रतीक है भगत सिंह के अमर बलिदान का, ये प्रतीक है अमर भगत सिंह के अमर बलिदान का। ये साक्षी है 200 बरस दी गई कुर्बानी का। झंडा तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये आराधना है, ये आराधना है, ये इबादत है, ये हमारी पूजा है। ये आराधना है, ये इबादत है, ये हमारी पूजा है। ये प्रतीक है अडिग अनवरत आस्था का, अधर्म पर धर्म की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय के इतिहास का। ये चक्र है, ये चक्र है, ये शौर्य है, ये गौरव है अमर जवान का। ये चक्र है, शौर्य है, गौरव है अमर जवान का। ये प्रश्न है हमारे अभिमान का, हमारे स्वाभिमान का। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। तिरंगे में बसते हर भारतीय के प्राण हैं, तिरंगे में बसते हर भारतीय के प्राण हैं। हल है ये हमारे अन्नदाता किसान का, हल है ये हमारे अन्नदाता किसान का। बल है ये सरहद पे तैनात जवान का। मुतासिर है इससे अब सारा जहान, मुतासिर इससे अब सारा जहान है। ये गौरव है, ये गौरव है मेरे भारत महान का। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये अभिमन्यु है, ये अभिमन्यु है, ये अभिनंदन है, ये अभिमन्यु है, ये अभिनंदन है। ये केसरी नंदन है, ये चंद्रयान है, ये मंगलयान है। हमारे लिए वरदान है, तिरंगे के हर रंग में हमको दिखते भगवान हैं। शत शत नमन इसको कोटि कोटि प्रणाम है। तिरंगा हम सबकी अमिट पहचान है, ये भारत महान का अभिमान है। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, अखंड भारत की आन बान और शान है तिरंगा। तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू राकेशी, थैंक यू सो मच। और सही बोला आपने कि तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। हेलो हेलो। तो जो नेक्स्ट पोइट हैं जिनको बुला रहा हूं मैं, उनका नाम है राज लाली बटाला। तो मैं अपने आप को खुद ही निमंत्रित दे रहा हूं क्योंकि दैट सिचुएशन जैसी भी होती है, दैट्स ओके। सो पंजाबी विच एक छोटी जी रचना है। इवें आ कि
ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਧੀ ਬਣ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਧੀ ਬਣ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਟ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਟ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਰ ਤੋਂ ਝਟ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਰ ਤੇ ਬਸ ਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਰ ਰਾਗਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਾਲੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦੀ ਹੈ। Thank you so much. The next one is we have basically one entry for a couple minutes before I call the next Urdu poet, Dr. Naga Bhushan Mulki ji. So I would request him to please come on the stage. No, unke baad. No. He is the final. तो इनके बाद की बारी है, please. वैसे I would request Dr. Naga to please come on the stage. Okay. Thank you. Please. आइए. Hello, good evening. My name is Dr. Usha Kolpe, and first of all, thank you very much, Mr. Gurmeet Singh, for inviting us. We represent Karnataka and Kavana Association, and I thank Mr. Ranjit Singh for giving us an opportunity. This poetry is by Dr. Nagbhushan Mulki. He is a scientist, and he was the first one to show turmeric prevents the cancer. He has published 6 Kannada books and 7 Kannada CDs he has released. This is a poetry on Bharata Mata, and it's on Sanskrit. Bharata Mata, Avinashini Mata, Jagadaika Jyoti, Bharata Mata, Pratah Namaskarami. Bharati Bharata Mata, Jagan Mata Swarupini. Avidya Nidra Nashini Devi, Advaitamrita Varsha Varshini. Sarva Yoga Bhoga Prayoga, Mantra Yantra Tantra Jnana, Shodha Samshodhana Prerini,
चिदा सच्चिदानंद सर्वानंदिनी सर्वजना सुखिनो श्रेया ज्ञान विज्ञान प्रदायिनी राग द्वेष क्लेश वेश नाशिनी धर्म कर्म यश विवर्धिनी योग सत्व तत्व समन्विनी श्री गुरु जगद्गुरु सद्गुरु जननी भगवदावतारकारिणी दिव्य ज्योति सदा नमस्तुते भारत माता अविनाशिनी माता जगदैक ज्योति भारत माता प्रातः नमस्करामि। जय हिंद। Thank you very much. Again, I'm basically Gurmeet ji, निशा जी हैं यहाँ पे? I would request Nisha ji please come on the stage and for a couple minutes please recite a poetry. So Nisha ji please. आप सभी को मेरा नमस्कार। मिल्वॉकी से मैं आप सभी के बीच में आई हूँ, डॉक्टर निशा पंड्या। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मुझे इस अवसर पर ये मौका मिला है। मैं मानती हूँ कि अब बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी दो पंक्तियों के साथ अपनी कविता सुनना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक एक धागे को बुना जाता है, जिस प्रकार एक एक धागे को बुना जाता है, कविताओं को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। कविताओं को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। आज उस पवित्र भूमि की बात करूंगी। यह पुनीत स्थली यहाँ धीरे से आना। मैं जलियांवाला बाग की बात कर रही हूँ। उसकी भूमि क्या कहती है कि यह पुनीत स्थली यहाँ धीरे से आना, गुरु नानक के बेटों का रक्त बहा है ये बतलाना, नम आंखें हो भूमि पर शीश झुकाना, और गाना हो तो वंदे मातरम या रंग दे बसंती चोला ही गाना। सन 1919 जलियांवाला बाग की घटना हुई और फिर वो आग बढ़ती रही और 1947 को आजादी प्राप्त कर सकी। इन तमाम घटनाओं से हमें ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए कि हमने बहुत कुछ खो करके आजादी प्राप्त की है, जिसकी हिफाजत करना हम सभी का दायित्व है। मैं मूलतः राजस्थान की रहने वाली हूँ और राजस्थान की मिट्टी हल्दी घाटी वीरों की भूमि कहलाती है। उसके बाद मुझे पंजाब में भी रहने का मौका मिला। उस भूमि को भी प्रणाम करती हूँ और कुछ पंक्तियां आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे तालियों के साथ में आशीर्वाद दीजिएगा। महावीर गांधी सुभाष के देश ने, महावीर गांधी सुभाष के देश ने अहिंसा की सीख सिखा दी थी। निहत्तों पर गोलीबारी, निहत्तों पर गोलीबारी सत्ताधीशों की ये कैसी परिपाटी थी। आजादी के दीवानों ने जिसके खातिर अपनी जान लुटा दी है। जलियांवाले बाग की भूमि उतनी ही पवित्र जितनी की हल्दी घाटी है। और एक छोटा सा मैंने गीत लिखा है जी, मैं एक छोटा सा एक 4 पंक्ति का एक गीत सुनाना चाहती हूँ। जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया। इंसानियत से इंसान का नाश हो गया, इंसानियत के इंसान का नाश हो गया। दुश्मन की चाल थी, सत्ता की ढाल थी, दुश्मन की चाल थी, सत्ता की ढाल थी। बच्चा बड़ा क्या बूढ़ा शहीद हो गया। देखिए, जब एक सिपाही मरता है, एक वीर मरता है, तो उसकी माँ को कैसे बताया जाए। सोच कर रूह मेरी अब कांप उठती है,
सोच कर रूह मेरी अब कांप उठती है, बताऊं मैं माँ को कैसे तेरा लाल सो गया, बताऊं मैं कैसे माँ को तेरा लाल सो गया। हमारे पास समय बहुत कम है, कविताएं लिखी हैं मैंने और भी, लेकिन अंतिम दो पंक्तियों से इसको मैं यहीं विराम देना चाहूंगी। शासकों का अंत था, आजादी का रंग था, शासकों का अंत था, आजादी का रंग था, आने बाने तिरंगे की जलिया बाग बन गया, आने बाने तिरंगे की जलिया बाग बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. I would request everybody in the hall, please maintain silence, please. जो सबसे सीनियर राइटर हैं हमारे शिकागो लैंड में, और आई थिंक इट्स एन ऑनर कि वो आज हमारे बीच हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद। डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद वो उर्दू समाज से हैं, बहुत ज्यादा काम है इनका उर्दू में। गुलबो नाम की एक बुक इन्होंने पर्शियन से। एवरीबॉडी प्लीज गुरमीत जी, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट प्लीज मेंटेन साइलेंस। एवरीबॉडी प्लीज टेक सीट्स प्लीज। थैंक यू। एक मिनट सर, एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज। एक बार गुजारिश है आपसे कि प्लीज अपनी सीट्स ले लिए और मेंटेन साइलेंस। तो उनके चंद अशआर आपकी नजर। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि जुदा है सबसे, जुदा है सबसे, जुदा अपनी शान रखते हैं, जुदा है सबसे, जुदा अपनी शान रखते हैं, मिजाज वाले अलग आन बान रखते हैं, मिजाज वाले अलग आन बान रखते हैं। और है पूछने की जरूरत तो पूछ लो हमसे, है पूछने की जरूरत तो पूछ लो हमसे, हम मुंह में हमारी जुबान रखते हैं, हम मुंह में हमारी जुबान रखते हैं। सो डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद। और इनके बाद आई वुड रिक्वेस्ट कि जो ऑल द पोइट्स इनके बाद प्लीज कम ऑन द स्टेज, वी टेक ऑन ग्रुप पिक्चर, यू नो। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का और यहाँ के मैनेजमेंट का, और ख़ासतौर पर रणजीत सिंह जी का और बटाला साहब का कि उन्होंने बड़ी अच्छी महफिल सजाई है। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि बराह करम ज़रा खामोशी अख्तियार करें, पीछे गड़बड़ हो रही है, जरा आहिस्ता आवाज में बातें कर लें या फिर बैठ जाएं तो मुनासिब रहेगा। मैंने इस खास मौके के लिए अभी एक हफ्ता पहले चंद अशार कहे हैं। अच्छा, खास बात यह है कि इस दो इवेंट्स हुए हैं, एक गम का इवेंट है, एक खुशी का इवेंट है। जैसा आप समझते हैं कि जलियांवाला बाग गम लेकर आया और वैसा की खुशियों का मेला है। इसी को मैंने 4 मिसरों में रखा है, जरा मुलाहजा फरमाइए। हाजिरीन तवज्जो चाहूंगा, जरा खामोशी अख्तियार करें तो कुछ अर्ज करूं। खता के चार मिसरे देखिए। यह सच है जंगे आजादी में लाखों पेचो खम आए, ये सच है जंगे आजादी में लाखों पेशो खम आए, मगर तारीख में ऐसे जमाने आके कम आए। ये सच है जंगे आजादी में लाखों पेचो खम आए, मगर तारीख में ऐसे जमाने आके कम आए। वो वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग का मंजर,
वो वैसाखी के दिन, कॉम्बिनेशन देखिए, वो वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग का मंजर, गमों के साथ खुशियां थी, खुशी के साथ गम आए। गमों के साथ खुशियां थी, खुशी के साथ गम आए। अजीब कॉम्बिनेशन है। बहरहाल अब मैंने यानी इंसानियत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, इत्तेहाद के नाम पर, इत्तेफाक के नाम पर अभी अभी चंद अशार लिखे हैं, वो आपको पेश कर रहा हूं मैं। देखिएगा, भारत की आन बान, सभी के लिए काल है ये, भारत की आन बान बढ़ाते हुए चलो, भारत की आन बान बढ़ाते हुए चलो, बीते दिनों की याद दिलाते हुए चलो, बीते दिनों की याद दिलाते हुए चलो। अरे जलियांवाला बाग से लेते हुए सबक, जलियांवाला बाग से लेते हुए सबक, कुर्बानियों पे फूल चढ़ाते हुए चलो, कुर्बानियों पे फूल चढ़ाते हुए चलो। और शेर देखें, वो एक दिन के जिसमें हजारों हुए शहीद, वो एक दिन के जिसमें हजारों हुए शहीद, उस दिन की दिल में जोत जगाते हुए चलो, उस दिल में जोत जगाते हुए चलो। वो एक दिन के जिसमें हजारों हुए शहीद, उस दिन की दिल में जोत जगाते हुए चलो। और शेर देखें, ऐसा चलो कि करते रहे लोग वाह वाह, ऐसा चलो कि करते रहे लोग वाह वाह, नफरत मिटा के प्यार बढ़ाते हुए चलो, नफरत मिटा के प्यार बढ़ाते हुए चलो। और शेर देखें, साए में जिसके सबको मिले अमनो आश्ती, साए में जिसके सबको मिले अमनो आश्ती, साए में जिसके सबको मिले अमनो आश्ती, रास्ते में ऐसे पेड़ लगाते हुए चलो, रास्ते में ऐसे पेड़ लगाते हुए चलो। आ जाएं फिर से लौट के खुशियों के रात दिन, आ जाएं फिर से लौट के खुशियों के रात दिन, आ जाएं फिर से लौट के खुशियों के रात दिन। आशा यही है सबको बताते हुए चलो, आशा यही है सबको बताते हुए चलो। और ये आखिरी शेर कह रहा हूं, उसके बाद मख्ता होगा। तो देखें कि ईसाई हो के हिंदू वो मुस्लिम हो या के सिख, शेर देखें साहब, ईसाई हो के हिंदू व मुस्लिम हो के या के सिख, हर शख्स को गले से लगाते हुए चलो, हर शख्स को गले से लगाते हुए चलो। ईसाई हो के हिंदू हो, मुस्लिम हो या के सिख, हर शख्स को गले से लगाते हुए चलो। और ये मक्ता पढ़ रहा हूं, चलना पड़े तो मिलके चलो सबके साथ साथ, चलना पड़े तो नसीहत है मेरे लिए, सबके लिए, कि चलना पड़े तो मिल के चलो सबके साथ साथ, तौफीक सबसे हाथ मिलाते हुए चलो, तौफीक सबसे हाथ मिलाते हुए चलो। चलना पड़े तो मिल के चलो सबके साथ साथ, तौफीक सबसे हाथ मिलाते हुए चलो। भारत की आन बान बढ़ाते हुए चलो और बीते दिनों की याद दिलाते हुए चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी। I would like to call on the stage Dr. Afsar, please. Dr. Afsar, Rakend, Rakesh Malhotra ji, Anurag Mishra Raj, please come on the stage. Thank you very much. Thank you guys for joining us. Rakesh.
अभी रुको काम को हंसते हंसते बात तकरीबार तेरे वर्गा कोई न बनी रवाना लागा दिल्ली में गवाया Over to you. Now we are going to close this meeting, and before that, a big thank to Midwest Punjabi Association, Mr. Gurmeet Singh Bhagwan. There is no doubt that today's program was really very good. It is not great because of wonderful performances we had today. It is great because of the great vision of the program. I have been told that Midwest Punjabi Association will continue this pattern in its program in the years to come. Give a big hand to him. It has been decided that in the years to come, every year in the Punjabi Virsa, Midwest Punjabi Association will be paying tribute to one author from Punjabi language, one from Hindi language, and one from one of the Indian regional languages. So next year we will be paying tribute to Javed Meghani, who is Bharat Ratna and a prominent author from Gujarat. This way, we will be able to interact about the great treasure of literature that we have in coming programs. We will engage more youth and children. And in the end, I have no words to express my thanks for all of you for your time and for your hard work, and we will continue to engage in this way, we all together, different communities. Thank you very much. Thank you everyone. Good night, and our special thanks to our brothers from Muslim community who, despite day-long fast, have come and have made this program their presence. Thank you so much. Ranjit, I think we missed one organization, the team from Savera, Jaspreet Kaur Manji. Can we please present the token of appreciation to her? Please. She was request Savera team to please come here. The Savera team, ladies and gentlemen. Who we all know for his media work, he is today launching his logo, GSD, and he needs your blessings and your remarks. And can we have all of you on the stage, please, for your best wishes to him while he is launching his sparkling logo.